यहाँ पे क्या डेटा दिया है, नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड पर मिनट 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79. Number of typists 2, 8, 15, 12, 3 is given. Okay, so here is a look carefully. यहाँ पे जो क्लास इंटरवल दिए गए हैं ये कंटिन्यूअस नहीं है, एक्चुअली डिसकंटिन्यूअस है, बिकॉज यहाँ पे gap between these two number is 1. Also here is a gap, also gap between two adjacent class interval is there. So that we want to convert this discontinuous class intervals into continuous class intervals by using correction factor. So correction factor कैसे find करते हैं? So lower limit of second class minus upper limit of first class upon 2. So that 40 minus 39 1 upon 2 0.5. So we add the correction factor 0.5 to all upper limits and we subtract the correction factor from all lower limits. So we get the continuous class intervals. So what happen, यहाँ पे क्या होगा, 30 minus 0.5, so यहाँ पे क्या होगा 29.5, यहाँ पे क्या होगा लोअर लिमिट 39.5, subtract 0.5 from 50, 49.5, from 60, 59.5, and from 70, 69.5. We add the correction factor 0.5 to upper limit. So 39 plus 0.5, 39.5, 49 plus 0.5, 49.5, 59 plus 0.5, 59.5, 69 plus 0.5, 69.5, and 79 plus 0.5, 79.5. So these are our required continuous class interval. So our solution is these continuous class intervals and respective frequencies. So we first draw the x-axis and y-axis. This is x-axis, this is y-axis. We take the scale on right corner, scale on x-axis. Here is a continuous class interval. यहाँ पे डिफरेंस कितना है 29.5 to 39.5 10 है. सो हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10. यहाँ पे क्लास इंटरवल्स का विड्थ लेना है. यहाँ पे ऑन एक्स एक्सिस ये जो क्लास इंटरवल हमें प्लॉट करना है उसके लिए स्केल क्या लेना है ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल. सो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10. ओके, आफ्टर दिस वी टेक number of typists, number of words typed per minute. Actually 1 centimeter equal to what 10 words, 10 words. On y axis what happen, on y axis 1 centimeter equal to 1 centimeter equal to मिनिमम फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 2 है. सो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू
two number of typists. So 2 typists. Okay. So we take the scale. Start from यहाँ पे 0. Okay. So we plot the points on x-axis. There is a 1, 2, 3, 4, 5. First, second, third, fourth, fifth, sixth and seventh. So this is okay. So we plot the class intervals. So यहाँ पे हम 29.5. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So यहाँ पे we start from this class interval 29.5. So यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे 29.5. यहाँ पे 29.5 to 39.5. So यहाँ पे 39.5. यहाँ पे 49.5. यहाँ पे 59.5. 59.5 के बाद 69.5. यहाँ पे 69.5. 69.5 के बाद 79.5. Okay, so this is the last class interval. Okay, so इसके बाद हम प्लॉट करेंगे frequencies on y-axis. Frequencies on y-axis. So यहाँ पे हमने लिया है 1 centimeter equal to 2. So 1 centimeter equal to 2. So we take the 1 centimeter equal to 2, 4, 6, 8, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 के बाद 14 और 14 के बाद लास्ट 16. सो यहां तक हमारा क्या होगा y एक्सिस होगा. यहां तक y एक्सिस. ओके, सो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और लास्ट 16. ओके, सो वी ड्रॉ द रेक्टेंगल्स. फर्स्ट क्लास इंटरवल हैज हाइट 2. सो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रेक्टेंगल हैज हाइट 2. सो यहाँ पे first rectangle has a height 2. Second rectangle, second class interval has height 8. Third class interval has height 15.
This class interval has height 12. And last class interval has height 3. Has height 3. So in this manner we have drawn the histogram. Our next problem is hence draw फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए क्या करना पड़ता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए जो फर्स्ट रेक्टेंगल है उसके प्रीसीडिंग में एक क्लास इंटरवल लेना है. यहाँ पे एक क्लास इंटरवल लेंगे 19.5 टू 29.5. ओके. और जो लास्ट रेक्टेंगल है उसके लिए एक सक्सीडिंग, उसके आगे एक क्लास इंटरवल लेंगे 89.5. सो एक्चुअली दिस इज अ रेक्टेंगल ऑफ हाइट 0. यहां पे भी रेक्टेंगल ऑफ हाइट 0. ओके. और फ्रीक्वेंसी 0. सो यहां पे क्या करना है? एक्चुअली वी मार्क द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल दीज रेक्टेंगल्स. मार्क द ऑल मिड पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल्स. मिड पॉइंट्स ऑफ दिस रेक्टेंगल्स. और बाद में क्या कहा है? ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहा है ना हमें. सो फॉर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या करना चाहिए? एक्चुअली join these all midpoints by straight line. So we join these points by straight line. So in this manner we draw the frequency polygon by using the histogram. Also we can enjoy more problems. Okay. No more spending your energy and money on coaching classes or missing classes for rain, for rally and any other nonsense. Subjects covered by multiple teachers with repeat telecasts. Doubts, concepts, applications, no problem. All explained through great and significant animation. So sit back comfortably in your home and watch Study Spectrum TV channel. Now we discuss next problem. Draw frequency polygon for following data. यहाँ पे हमें दिया है area in hectare is given 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80. Number of farmers is given. So यहाँ पे look carefully. यहाँ पे discontinuous class intervals है. Gap between these two adjacent upper limits and
लोअर लिमिट्स। सो यहाँ पे डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल दिए हैं, लेकिन हमें क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसका मतलब है यहाँ पे हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हमें क्लास मार्क्स फाइंड करना है, लेकिन क्लास मार्क्स के लिए हमें ये जो क्लास इंटरवल्स दिए डिसकंटिन्यूअस, ये हमें कंटिन्यूअस करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज क्लास मार्क्स ऑफ कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स एंड डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स इज द सेम। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट टेबल प्रिपेयर करेंगे। सो सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे क्लास मार्क्स xi, क्लास मार्क्स xi, नंबर ऑफ फार्मर्स मतलब फ्रीक्वेंसी fi। so we prepare the table, class marks 11 to 20, so we add these two numbers and divide by 2. so 11 plus 20 31, 31 upon 2 15.5 21 plus 30 51 upon 2 25.5 41 to 50 41 plus 50 91 upon 2 91, यहाँ पे 31 plus 40 क्या होगा 71 upon 2 35.5, यहाँ पे 41 plus 50 91 upon 2 45.5, यहाँ पे 51 plus 60 क्या होगा 111 upon 2 50.5, यहाँ पे क्या होगा 61 plus 70 131 upon 2 65.5, and last class interval 71 plus 80 151 upon 2 75.5, and this is a given respective frequencies fi. So 58 103 208 392 112 34 and last 12. So we draw the frequency polygon using this class marks and frequencies. So first we draw the x axis and y axis. So this is x axis, this is y axis. So on x axis we plot the class marks xi, on y axis we plot the frequency fi. For plotting this xi and fi we take proper scale. So यहाँ पे scale on x axis, here is a start, here is a class marks 15.5 25.5. so यहाँ पे difference कितना है 10 का है.
सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये जो डिफरेंस है ये दोनों क्लास मार्क्स में, वो डिफरेंस क्या है, 10 है. सो वी टेक ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10, 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 हेक्टर. यहाँ पे यूनिट दिया है हेक्टर. सो हेक्टर 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 हेक्टर. फ्रीक्वेंसी इज गिवन. सो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी इन द मल्टीपल ऑफ 50 लेंगे. सो यहाँ पे ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 फार्मर्स. यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी जो है वो फार्मर्स है. सो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल 50 फार्मर्स. ओके. सो फर्स्ट वी प्लॉट द all class marks on x axis. So first is 15.5. So यहाँ पे we start the 1 2 3. यहाँ पे कितने क्लास मार्क्स हैं, 3 3 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 और 8. This is our x axis. Okay. So यहाँ पे हम we take this point is 15.5. So यहाँ पे 15.5 25.5 35.5 45.5 55.5 65.5 75.5. ओके. सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट. सो वी ड्रॉ हियर द ओरिजिन 0. सो यहाँ पे क्या पॉइंट होगा, 10 पॉइंट. यहाँ पे 10.5 माइनस 10. सो यहाँ पे 5.5 होगा, 5.5. ओके. सो वी ड्रॉ द एक्चुअली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ओके. So we plot the x side Fi. Okay. So we plot the Fi also on y axis. So 1 centimeter equal to 50 farmers. So यहाँ पे क्या होगा, $50 100 150 200 250 300 350 एंड लास्ट 400. सो यहाँ पे ऑन वाई एक्सिस क्या होगा, यहाँ पे 50 100 150 200 250 250 के बाद 300 350 और 350 के बाद 400. ओके. सो वी प्लॉट द ऑल दिस xi विथ fi. सो फर्स्ट क्या है 15.5, फ्रीक्वेंसी क्या है 58. सो 15.5 एंड फ्रीक्वेंसी 58. सो 58 क्या हो गया, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 100 है. सो यहाँ पे जो स्मॉल है ये क्या होंगे, ये 10 होगा. सो यहाँ पे 60 होगा. सो इससे कम मतलब ये होगा. सो हॉरिजॉन्टली
आप ये सब ड्रॉ कीजिए ग्राफ पेपर पर, आपका परफेक्ट आएगा यहाँ पे। सो दिस इज पॉइंट 25.5 के लिए क्या है 103। सो 103 का मतलब ये 100 है, 100 से थोड़ा सा यहाँ 10 होगा, सो थोड़ा सा ज्यादा 100 से। सो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 103। 35.5 के लिए क्या होगा 208। सो यहाँ पे 200 है, 208 का मतलब है और थोड़ा 8 से ज्यादा, तो यहाँ पे होगा तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा 392 फॉर 40.5। 45.5 के लिए क्या होगा 392। सो यहाँ पे ये है 392 का मतलब क्या है 400 से कम। सो यहाँ पे होगा 50.5 के लिए क्या होगा 112। सो यहाँ पे 100 है, 112 का मतलब हो गया एक्चुअली 103 से कम। सो यहाँ पे क्या होगा 103 से एक्चुअली ज्यादा। सो यहाँ पे क्या होगा सो दिस इज पॉइंट 112। 65.5 के लिए क्या है 34 क्या होगा यहाँ पे ये 25, यहाँ पे 30 होगा, 30 से थोड़ा ज्यादा। सो यहाँ पे क्या होगा सो दिस इज पॉइंट 60.5 के लिए 34। 75.5 के लिए क्या है 12 है। 12 का मतलब क्या होगा यहाँ पे 25 से हाफ 12.5 उससे भी थोड़ा कम। सो यहाँ पे ये पॉइंट होगा। सो वी प्लॉट ऑल दिस एक्स आई एंड एफ आई। इसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट के बाद एक और पॉइंट इसके पीछे लेना है ऑफ फ्रीक्वेंसी 0, और जो ये लास्ट पॉइंट है उसके आगे एक पॉइंट लेना है ऑफ फ्रीक्वेंसी 0। सो यहाँ पे क्या होगा फ्रीक्वेंसी 0। सो ये पॉइंट होगा और ये लास्ट पॉइंट क्या होगा 75.5 प्लस 10, तो क्या होगा यहाँ पे एक्चुअली 85.5। सो यहाँ पे क्या होगा, यह हमारा लास्ट पॉइंट होगा। ओके, सो वी प्लॉट ऑल दीज रिक्वायर्ड पॉइंट्स। अब हमें क्या ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का क्या मतलब है एक्चुअली जॉइन ऑल द पॉइंट्स बाय यूजिंग straight line। So we join all these points, plotted points by straight line. So यहाँ पे so we join this point to this next point। यहाँ पे ये next point join होगा, बाद में ये point join होगा next, बाद में ये point join होगा next, बाद में ये पॉइंट ज्वाइन होगा और बाद में ये पॉइंट ज्वाइन होगा और बाद में लास्टली ये पॉइंट ज्वाइन होगा। सो इन दिस मैनर वी ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसी के साथ हमने ये पूरा चैप्टर आपने देखा है कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। सो ये सब आपको करना है ऑन द ग्राफ पेपर। अब जब आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे तो ये परफेक्ट आएगा, नो एनी मिस्टेक इन द ग्राफ पेपर। सो आप अगर ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे तो बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे देखिए ये पॉइंट यहाँ इससे यहाँ
ज्वाइन किया है, इससे यहाँ ज्वाइन किया है, इससे यहाँ ज्वाइन किया है, लेकिन ये ज्वाइन नहीं हुआ है, सो एक्चुअली रह गया यहाँ पे। सो वी ज्वाइन दिस पॉइंट, एक्चुअली दिस नेक्स्ट पॉइंट, ओके। और इसके बाद हम इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे एक्चुअली। सो टेक केयर ऑफ दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स। तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, ये पॉइंट ऐसे होगा, पहले इस नेक्स्ट को होगा, फिर इस नेक्स्ट को ज्वाइन होगा, फिर इस नेक्स्ट को ज्वाइन होगा, फिर इस नेक्स्ट को ज्वाइन होगा, बाद में इस नेक्स्ट को, और बाद में इस नेक्स्ट को, और इस नेक्स्ट को, इस नेक्स्ट को, और इस नेक्स्ट को। तो इसी के साथ ये पूरा कंप्लीट होगा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओके। सो वी स्टॉप एट दिस पॉइंट, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, ये पॉइंट ज्वाइन होगा, इस पॉइंट से ज्वाइन होगा, ये पॉइंट इस पॉइंट को ज्वाइन होगा, और ये पॉइंट इस नेक्स्ट पॉइंट को ज्वाइन होगा, और ये पॉइंट इस पॉइंट को ज्वाइन होगा, और लास्टली ये पॉइंट इस पॉइंट को ज्वाइन होगा। और इन दिस मैनर वी कैन ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओके। सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, you should draw all the graphical representation problems on the graph paper। अगर आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपको एक्यूरेट डायग्राम नहीं मिलेगी। सो इसलिए आप केयरफुली ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कीजिए। स्केल लेते वक्त केयरफुली कुछ टिप्स ध्यान में रखिए, जैसे ये दोनों का डिफरेंस लेना है, और जो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स है उसका जो डिफरेंस विड्थ है वो आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू लेना है। ऐसे जो हमने जो ट्रिक्स दिए वो आप यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम, ओके।